Hello, everybody. I am Nandita, your verbal ability and soft skills trainer. So last class में we have studied about the HR questions. We got to know that what are these HR questions और ये क्यों पूछे जाते हैं, इनका importance क्या है, right? And we have covered, I believe, five pet questions of HR. So today also we are going to do the same thing. बट आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चंस जो कि बहुत कॉमन है और हमेशा पूछे जाते हैं, irrespective from which field you are. All right, so stay connected with me till the end of the video so that you get to know that what is meant by a particular question and what sort of reply you should give to the interviewer so that the interviewer is convinced with you and yes, you become the best fit for them. All right, so let's quickly see what is our learning objective. Okay, so today we are going to see how to answer common HR questions. हमने जो करे थे 5 करे थे, उसके आगे के हम continue करेंगे. How to answer common HR questions. Plus, I'll be telling you some do's and don'ts that you have to remember in your interview. All right, so let's get started. Okay, so yes, the question is, how do you handle working under pressure or meeting tight deadlines? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप चाहे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हो या फिर किसी और फील्ड से हो, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है. नाउ द मेन मोटिव ऑफ आस्किंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बिकॉज the employer wants to know that whether you are able to work under pressure, are you target oriented or not. Yes, सो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल भी घबराने वाली चीज नहीं है कि ये तो बहुत ही लगता प्रेशर वाली जॉब है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप किसी भी पोजीशन के लिए जाओ तो आपको इतना तो ध्यान में रखना है कि इफ एन एम्प्लॉयर इज पेइंग यू विच मीन्स दैट द एम्प्लॉयर इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम यू. और कई बार ऐसा होगा कि आपको डेडलाइंस दी जाती हैं, आपको एंड मोमेंट पे आपको कोई असाइनमेंट दिया जाता है एंड यू हैव टू फिनिश दैट. यस, सो ऐसा ना हो कि आप बाद में क्रिप करो. सो आपसे पहले ही पूछ लिया जाता है दैट दिस पर्टिकुलर रोल रिक्वायर्स यू टू वर्क अंडर प्रेशर, आर यू रेडी और नॉट. ऐसा नहीं कि हर बार ही प्रेशर होगा या एवरी टाइम देयर इज प्रेशर, नहीं, बट फिर भी दे वांट अ कैंडिडेट हु इज रेडी टू फेस सच चैलेंजेस. ऐसा ना हो कि एकदम से अगर कुछ कोई चीज आ जाए एंड देन यू आर कंप्लीटली लॉस्ट, यू आर बैफल्ड, आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है. यस, just to check this particular thing, just to check whether you are able to meet the deadline or not, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट. तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको बहुत ही अच्छे से आंसर देना है. यू नीड टू टेल द इंटरव्यूअर दैट यू आर फ्लेक्सिबल, यू आर अडेप्टेबल, you can work in any sort of environment, and yes, you have a habit of completing the work within the given stipulated time. तो आपको उनको बातों बातों में बताना है दैट yes, you are a kind of person जिसकी आदत है कि कुछ भी अगर दिया जाए तो वो डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर लेते हो आप, ठीक है. एंड यू आर ready to face any kind of pressure or you are ready to work under any kind of pressure. And आप एक छोटा सा एग्जांपल भी दे सकते हो. मे बी यू कैन टॉक अबाउट योर इंटरनल प्रोजेक्ट, कि आपके कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट होता है या कुछ भी ऐसा होता है वेयर इन वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम इज देयर एंड यू हैव वर्कड प्रीवियसली इन सच काइंड ऑफ थिंग, इन सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन. All in all, you have to convince the interviewer that yes, it's not the first time, but yes, previously also you have worked under pressure, so you very well know how to work under pressure and how to cope up. All right, okay, then next हमारा question आता है, describe a situation where you worked effectively as a part of team. Yes, this is also a very important question. ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है बिकॉज द इंटरव्यूअर वांट्स टू नो दैट वेदर यू आर अ टीम प्लेयर और नॉट. देखो, ऑफन वी हैव हर्ड दैट यू हैव टू बी अ गुड लीडर, यू शुड पोर्ट्रे अ गुड लीडरशिप स्किल, बट हम इसमें ये भूल जाते हैं दैट बीइंग अ गुड लीडर इज गुड, इट इज इंपॉर्टेंट, बट बीइंग अ टीम प्लेयर इज इक्वली इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी ऑफिस में जॉब करते हो, राइट, या फिर आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हो, सो इट इज नॉट एन इंडिविजुअल असाइनमेंट कि आपको ये चीज दे दिया गया, नहीं. देयर यू हैव टू वर्क विद द टीम, यू हैव टू कोलैबोरेट विद एवरीबॉडी,
ठीक है, आपके अंदर कुछ प्लस पॉइंट्स होंगे, किसी और के अंदर कुछ प्लस पॉइंट्स होंगे, आपके कुछ डाउन साइड्स होंगे, किसी और के कुछ नेगेटिव साइड्स होंगे, उनको सबको क्लब करके वेदर यू आर एबल टू वर्क इन अ टीम और नॉट। और कई बार ये होता है, अगर कोई काम इंडिविजुअली दिया गया हम कर लेते हैं, बट अगर वो काम ग्रुप में दिया जाए देन वी डू नॉट फील कंपैटिबल विद अदर्स। सो आपके अंदर ये बहुत क्वालिटी होनी चाहिए दैट यू शुड बी एबल टू वर्क विद टीम, you should be able to take everybody and then work, right? So this is one of the important qualities which an interviewer is looking in the candidate. So if such kind of question is asked, so you need to tell, you need to share your past experience, and you need to tell that yes, there was a certain project, or earlier also you have worked with people and it was a successful event. You can talk about any event that you have organized in your college or maybe in your school, and there you work together, and you need to tell what was others role and what was your role and how you collaborated and worked with them as a team which was successful. ठीक है, सो अगर आप कुछ इस तरह की बातें बताते हो तो इंटरव्यूअर को लगता है कि यस दिस पर्सन इज अ टीम प्लेयर। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एकेडमिक्स अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है, बट ऐसा नहीं है दैट द पर्सन विल नॉट बी एबल टू वर्क, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक इन टुडे सिनेरियो, if you're going to work for any company, they're actually looking for people who are ready to work in a team. They are not looking for someone who likes to work isolated. ठीक है, आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलेंगे आप अकेले नहीं कर पाओगे, यू आर हैविंग एक्सपर्टीज इन योर फील्ड, बट यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ अदर डिपार्टमेंट और अदर पीपल in order to complete that project. So you need to showcase this thing by describing some past event or project that you have conducted and where you worked as a team member and it turned out to be a successful event. Okay, all right. Now, my next question is, how do you stay updated with industry trends and advancements? So, obviously, this question actually focuses on that apart from your books, do you ever watch news or are you into a habit of reading newspaper? So, ये चीजें इसीलिए पूछी जाती हैं, राइट? क्योंकि आपके कोर्स में जो पढ़ रहे हो आप, ऐसा नहीं है कि वही सारी चीजें यू आर गोइंग टू यूज इन इंडस्ट्री। एंड लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली दैट वॉट एवर यू आर स्टडिंग राइट नाउ, ठीक है, आप जो भी आप कोर्स में कर रहे हो, आप उसका बहुत ही कम पार्ट, आप क्योंकि यहाँ पर बेसिक्स पढ़ रहे हो, राइट, यू वोंट बी एबल टू अप्लाई दोज थिंग्स इनिशियली। आपको जरूरत है दैट यू स्टे अपडेटेड विद द इंडस्ट्री ट्रेंड्स, विद द थिंग्स दैट आर इमर्जिंग न्यू इन द इंडस्ट्री। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल चैट जीटीपी, चैट जीपीटी, अब इस बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है, पर आप अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हो देन यू, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप किसी भी इंडस्ट्री से हो, यू शुड बी नोइंग व्हाट दैट पर्टिकुलर थिंग इज। इसीलिए इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन पूछते हैं दैट आर यू अवेयर ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स, आर यू अवेयर ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर देयर इन द मार्केट। तो इसके लिए आपको बहुत सिंपल सा चीज बताना है दैट यस सर आई कीप माई सेल्फ updated, and for that I usually listen to news, or maybe you can say I'm into habit of reading newspaper. I make sure that every day I spare like 15 minutes um, in going through the newspaper. And when you go through the newspaper, you basically focus on the news headlines, or you can talk about the updating things that are there in the market, or you can simply say that I'm into a habit of going through blogs. So when you go through blogs, you need to tell about you need to tell that which kind of blog you follow, ठीक है, और वहां से आपको क्या अपडेशन मिलता है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ी सी आपको अपना होमवर्क करना है कि आप जिस भी फील्ड के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको बताना है कि अगर उससे रिलेटेड कुछ ब्लॉग्स है, यू शुड बी नोइंग अबाउट दोज ब्लॉग्स सो दैट यू कैन टेल दैट यस आई एम क्वाइट अपडेटेड, आई कीप माई सेल्फ अपडेटिंग। आप पीछे नहीं हो, आपको सिर्फ आपका बुक्स का नॉलेज नहीं है, बट येस यू आर रीडिंग द इन्वायरमेंट एज वेल, कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सी चीजें ट्रेंड में है, दैट एवरीथिंग यू नो। एंड इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज किसी को भी एक रोबोट नहीं चाहिए होता है। आप जो काम कर रहे हो वो एक काम रोबोट भी कर सकता है, राइट? वाई दे आर हायरिंग यू, बिकॉज आपका जो डोमेन है उसके अलावा भी आपको बहुत सारे नॉलेज होने चाहिए, एंड दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर you can get all sort of knowledge. So if you have not started doing that, I am recommending you to start listening to the news, start reading the newspaper,
go through the blocks which are related to your major. All right. Now, next question is, how do you handle constructive criticism or feedback from superiors? So, students, again, this question is being asked just to check that how open you are to any kind of feedback. Anytime you get feedback, feedback इसलिए दिया जाता है कि अगर आप आज यहाँ पर हो तो आप यहाँ पर जाओ. So वो ये सुनना चाहते हैं that are you open to constructive feedback? Constructive feedback is something जो कि आप जो कर रहे हो, ठीक है, उसको और बेहतर बनाने के लिए होता है. That is constructive feedback, that is constructive criticism. ठीक है. So they just want to know that what is your approach, or they just want to know that अगर आपको कोई फीडबैक मिलता है, सो डू यू गो एंड फाइट विद द अदर पर्सन, यू स्टार्ट जस्टिफाइंग योरसेल्फ. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. whenever you get a feedback, whether it is from your employer or from your teacher, take the feedback, right? Never ever argue. Never ever argue. You just take it, and then it is your wish. You want to improve, you'll have to work on that. You do not want to improve, you do not work on that, right? So आपको ये बताना है that you are very much open to any kind of feedback and you really like if somebody is helping you to grow. So take feedback as a tool which is going to help you to grow. ठीक है. और यही एक एम्प्लॉयर भी सुनना चाहता है कि अगर कोई फीडबैक आपके सीनियर से मिला है, सो यू डू नॉट स्टार्ट फाइटिंग विद दैट पर्सन. नो, दिस इज नॉट द राइट थिंग, आई एम द ओनली who is right. आपको ये नहीं करना. You do not have to showcase your argumentative skills over there. Rather, what you have to show is that yes, you are open to any kind of feedback, which is going to help you to grow. You are going to grow, therefore the company will also grow. ठीक है. So with this attitude you should be there, and every employer wants to listen this कि हाँ, अगर उनके एम्प्लॉय को कोई फीडबैक दिया जा रहा है, सो दे आर टेकिंग इट इन अ पॉजिटिव मैनर रादर देन क्रिबिंग. ठीक है. सो जस्ट रिमेंबर that this question is asked, that how this question is asked just because to check how open you are to any kind of feedback, and this is actually an opportunity for you to improve. All right. So tell that yes, you are open to any kind of feedback, and once you get the feedback, you also need to tell that what is your approach on working for that particular feedback. आपको ये भी बताना होगा. ठीक है. So if you are telling this, which means you are convincing the interviewer that yes, you are the right candidate. You are not somebody with argumentative skills. All right. You are somebody who is very much open to accept any kind of feedback. All right. Next question is, tell me about a challenging situation you faced and how you resolved it. Now, challenging situation that you faced and how you resolved it. किसकी याद आ रही है? यहाँ पर they actually want to ask that do you have problem solving skill? अब कंपनी में आपको हायर कर लिया गया, ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर जो नॉलेज है वही चीजें आपके सामने आ गई. आपके सामने कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी जहां पर आपको क्विकली एक डिसीजन लेना है, आपको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करना है, एंड जरूरी नहीं है कि पूरी टीम आपके साथ हो सकता है उस टाइम पर आप अकेले हो. सो दे वांट टू नो दैट वेदर यू हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और नॉट, और you just want to play the blame game. See, people who play blame game, they always blame everybody for everything that is happening. आपको वो नहीं बनना है. Problem is there, you should be one who tries to find a solution, and if you try, maximum time it happens that you find the solution. So for such kind of situation, all you have to do is you have to convince the interviewer, telling that you have a problem solving skill, you have a problem solving approach. अगर कोई ऐसी challenging situation आती है तो आप हार कर नहीं बैठ जाते हो. Rather, you try to combat with that particular situation. First, you try to understand the situation well, and according to that, you make a plan, you make a strategy, and you start to solve that approach. This is what they want to listen. उनको ये नहीं सुनना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको बस
एस्केलेट कर रहे हो. दैट शुड नॉट बी द थिंग. फर्स्ट यू शुड ट्राई टू रिजॉल्व इट एट योर एंड. जब आपके एंड से ऐसा लगता है कि नाउ दिस प्रॉब्लम कुड नॉट बी सॉल्व एट योर एंड, देन यू शुड गो टू योर सीनियर in order to look for a solution. So you should be having a problem solving approach. और आपको यहाँ पर भी you will have to quote example. Students, मैं examples के लिए क्यों बार बार कह रही हूँ? Because whatever you are saying, that is more understood, that is understood well and accepted. अगर आप अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हो, ठीक है? So make sure that you are doing that. All right. तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए पूछा जाता है जस्ट टू मेक श्योर कि कैंडिडेट ने इससे पहले कोई चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करी है, अगर करी है तो किस तरह से उसको सॉल्व करा है. सो यू शुड बी रेडी विद एन आंसर. यू नीड टू थिंक ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है, कि कहाँ ऐसा कुछ ऐसा अपने लाइफ में फेस करा था एंड व्हाट वाज योर अप्रोच इन फाइटिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, वो भी आपको बताना है. ठीक है, ओके, ऑल राइट. सो now we are going to discuss what are the do's and don'ts of a personal interview. ठीक है, हमने बेसिक से HR questions discuss कर लिए. Now we will be talking about the do's and don'ts of a PI. ठीक है, हमने जितने भी पर्सनल HR questions जो हमने डिस्कस करे हैं, ऐसा नहीं है that these are the only questions which are being asked. HR questions बहुत सारे हैं एंड आप ये सेट फॉर्मेट नहीं बना सकते हो कि बस यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एज पर माय नॉलेज आई हैव गिवन द मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस. आगे भी अगर मैं थर्ड पार्ट बनाती हूँ HR क्वेश्चंस का, सो आई एम गोइंग टू इंक्लूड मोर क्वेश्चंस. बट फॉर नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सी what are certain do's and don'ts of a GD which you need to remember. कई बारी क्या होता है, subconsciously we do not know or we do something which is not acceptable. पर अगर एक बार आपको पता चल जाएगा that these are the things which you should be doing or those are the things which you should not be doing, तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा बैकग्राउंड में and you will be able to work on that, right? So let's get started. Okay. पहला हमारा डू है, डू मेक श्योर दैट योर हैंड्स आर अट्रैक्टिव. दिस मीन्स स्पॉटलेसली क्लीनिंग विथ ट्रिम्ड नेल्स. अच्छा, मैंने ये पॉइंट क्यों डाला है, क्योंकि मैंने कई बार हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताया है, एट टाइम्स दे गो टू द इंटरव्यू, राइट, एंड उनको पता होता है अच्छा कल इंटरव्यू एंड दे आर नॉट प्रिपेयर्ड. सो आइडियली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, मेक श्योर दैट योर नेल्स आर ट्रिम्ड. अगर फॉर एग्जाम्पल इफ फीमेल्स आर अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू एंड उनके अगर नेल्स ट्रिम नहीं है, what you need to do, either you need to apply some light colored pastel shade nail polish or keep it trimmed. ठीक है, because your clean appearance matters a lot. वो एक चीज होती है जो इंटरव्यूअर ऑब्जर्व करता है, राइट, दैट कम्स अंडर योर हाइजीन एज वेल. सो इसका बहुत ध्यान रखना है दैट योर नेल्स आर क्लीन्ड एंड ट्रिम्ड. देन do make sure your hair is in place and conservative. कई बारी क्या होता है, हम जैसे कॉलेज जाते हैं या जैसे हम पार्टीज में जाते हैं, in the same manner we appear for the interview. That should not be done. When you know that you are in an interview, you have to be in a formal attire, ठीक है, and you need to present yourself formally. So make sure if you keep your hair open, they are properly combed, ठीक है, एक डर्टी लुक नहीं आना चाहिए, और यू कैन सिंपली मेक अ बन. एंड फॉर बॉयज जस्ट सिंपली comb your hair, all right. Do not make spikes and go, because you know you are appearing in a formal environment. आप किसी पार्टी में नहीं जा रहे हो, so इसके अकॉर्डिंग you have to make yourself presentable. All in all, आपको अपने आप को neat and clean show करना है, right? So according to that, you need to comb your hair. Do pay attention to your scent. Moderation is recommended. Earlier also when I have shared some grooming tips, I have told that whenever you are using any kind of perfume or cologne, make sure that it is mild. बहुत आपको strong perfume नहीं use करना है, strong scent use नहीं करना है, because you never know, the other person might be allergic to strong smell. ठीक है, so try to use a mild perfume or a mild cologne that is actually going to give a very good impression of yours. Next, go to the restroom before you visit the employment lobby. Now, this is something very important that I wanted to include. Many times it happens, I know, when you go for an interview, you actually rush, ठीक है, and then you have to wait for a long time. So it's better
that before you enter the room of the HR to appear for your interview, you go to the restroom beforehand, all right, because it is actually very awkward अगर आप बीच में उठकर washroom जाते हो, all right. To avoid any such type of situation, it's better that you use the washroom beforehand, ताकि you are calm, you are composed. तो इसका भी बहुत ध्यान रखना है. Next, recruiters place a lot of emphasis in eye contact, on eye contact. So again and again, eye contact is an important part of your body language. Make sure that when you are talking to the examiner, your eye contact is there on the examiner. ऐसा नहीं है that you have to, stick your eyes there, but you need to talk in such a manner that the interviewer feels that yes, you are talking to the interviewer, you are having a good eye contact. That also reflects your confidence. जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आप तभी आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हो, राइट? सो जस्ट टू टेल दैट यस यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज एन आई कॉन्टैक्ट. नाउ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं कि मैम अगर हम आंखों में देखकर बात करते हैं, देन वी फॉरगेट व्हाट वी हैव टू से. उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका आप सोच लो. आप किसी से भी बात करो, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग टू द इंटरव्यूअर, आप स्ट्रेट यहाँ पर देखिए, ठीक है, जस्ट लुक एट द टेम्पल, all right, and then give the answer. खुद ही लगेगा that you are maintaining an eye contact. So initially you can start doing this, and slowly and gradually when you are going to talk to more and more people, वो चीजें eliminate हो जाएंगी. ठीक है? Next, do try to sparkle. Use gestures in your conversation. Make sure they are smooth and emphatic. ठीक है? Now whenever you are talking, it is a kind of conversation. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है तो आपको बिल्कुल भी स्माइल नहीं करना है, आपको एकदम ऐसे स्ट्रेट होकर बैठना है और हंसना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. दैट इज अ लाइट कॉन्वर्सेशन wherever needed. I'm not asking you to laugh loudly, of course that is not appreciated, but yes, for most of the questions, अगर आप लगता है if the interviewer is smiling, you can also put a light smile on your face and give the answer. Why? When you smile and give the answer, it also makes the other person at ease, and वो conversation एक smooth conversation हो जाती है, right? So इन चीजों को आपको ध्यान रखना है. ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हो सकता है आप ये करते भी हो, बट अगर नहीं करते हो, इन पर ध्यान नहीं किया है, then I would recommend that please start doing these small things and you will feel there is a lot of difference. Okay, now there are certain things which we are not supposed to do in a personal interview or while you are appearing for your HR round. ठीक है, HR round है या technical round है, वो है आपका interview, right? So these things are applicable in any sort of interview. तो आपको ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है. Number one, don't be late. In fact, plan to be early for any scheduled interview. टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, राइट? आपको टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देना है. ठीक है, बिजनेस में टाइम इज मनी. ठीक है, सो यू नो दैट इफ योर इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड फॉर 9 AM, यू शुड बी देयर बाय 8:50 और 8:55. दैट इज फॉर श्योर. ठीक है, आपको लेट नहीं करना है. ठीक है, आप जल्दी पहुंचो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बट आपको लेट नहीं करना है, राइट? All right. Now, second point is don't sit down until you are asked. Don't worry about this. The recruiter won't make you stand. But if you move quickly to your chair and sit down, you will appear forward. See, this is a part of your manner. Okay, this becomes a part of your etiquette. Whenever you enter the room, wait for the interviewer to ask you to sit. आप खुद से जाकर बैठ रहे हो, so that will look quite awkward. ठीक है, वो आपका दिखाएगा नहीं that yes you are carrying certain etiquettes. हमें ये भी दिखाना है that yes we are well educated person. So in order to avoid such things, as soon as you enter the room, just with a small smile on your face, greet the interviewer, all right? And do not sit until or unless the interviewer is asking you. Of course, वो आपका खड़े होके तो interview लेगा नहीं, right? The recruiter itself will ask you to sit. So just wait for them to tell you, to ask you to sit, and then sit. And once you sit, you just thank the recruiter or the interviewer for asking so. All right.
follow these small things because these small things actually makes a huge difference. Then don't lean or put your elbows on the interviewer's desk. Sit back in your chair so the interviewer can see more of you. Sit erect. Again, this is part of your body language. ऐसे यूजुअली अगर आप ग्रुप डिस्कशन में भी होते हो, सो आई हैव टॉट यू दैट यू हैव टू सिट स्ट्रेट, यू डू नॉट हैव टू लीन, ऑलराइट, यू डू नॉट हैव टू शेक योर हैंड्स और लेग्स. आपको आराम से बैठना है, आपके जो हाथ है दैट शुड बी देयर ऑन योर लैप्स. अवॉइड टैपिंग द टेबल और यू नो प्लेइंग विद अ पेन. अगर फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू गेट सम कॉल इन बिटवीन, तो ऐसा नहीं आप पेन को टैप कर रहे हो या उसे खेल रहे हो. सो दीज आर एक्चुअली द थिंग्स विच tells that you are nervous and you do not have to show that. Just keep your hands on your thighs and sit properly. Sit straight, do not lean because that will tell about your lethargic behavior and nobody wants to hire a lethargic or a lazy person. Then don't carry an oversized handbag even it is fashionable. Carry a bag that is smaller and more manageable. ये बहुत बारी ये गर्ल्स के साथ होता है, राइट? दे हैव so much of stuff and they carry a huge bag. So आपको ऐसा नहीं करना है. Make sure that you are carrying a small bag and आपके पास आपका जो भी बैग हो, do not keep that bag on the recruiters or interviewers table. No, that is not the manner. Keep your bag on the floor next to your chair. ठीक है? So आपको इस चीज का ध्यान रखना है. बहुत बारी होता है आप अपना बैग ऊपर रख देते हो and it does not, you know, looks nice. Keep your bag on your side, and once you are done with the interview, you can just pick that back and go. All right, formal attire is mandatory. That I've already told you. You know that interview is a kind of formal situation, so you are supposed to dress up yourself into a formal attire as per the season. ठीक है? As per the season, like if it is hot, I'm not asking you to wear that coat and all and go. Just wear trousers, shirt, or a tie if needed, and females can wear a business suit, or you can simply wear Indian suit or sari, whichever is comfortable. And for more, you can just watch my grooming tips video wherein I have discussed in detail about the फॉर्मल अटायर. आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरह के फॉर्मल अटायर आते हैं and what all things we need to keep in mind when we are wearing those formal attire. Then don't show your nervousness by drumming. This I have already discussed. You do not have to drum the table. You do not have to play with the pen. You do not have to play with your hair because all these reflect your nervousness. ये सारी आपकी nervousness है. Just sit calm and composed. Whatever question is asked, give an answer for the question. Whatever question is asked, give an answer for the question, and then wait when the interviewer tells you that the question answer session is done and when you can hear from the interviewer. So keep it simple. आप जितना घबराएंगे या आप बहुत ही ज्यादा वो करेंगे, so आप खुद ही फील करोगे कि आपने गड़बड़ कर दिया है. Take it as a normal conversation. उसका आप मोटिव समझो कि मोटिव ये है because they want to check that we are carrying those qualities which is needed. That's it. उनको और कोई मतलब नहीं है आपसे, आपकी पर्सनल लाइफ से. Don't show your nervousness. Okay, हो चुका है. So yes, these were the things that I wanted to know, tell you people कि क्या है हमारे do's, क्या है हमारे don'ts. And yes, if you have any question, you can always comment me. आपको किसी भी चीज में doubt हो, आप मुझसे पूछ लो that are we supposed to do this way or not, and I will be more than happy to help you. So I believe जो basic questions थे वो हमने cover कर लिए हैं. Now you know the basic etiquette, how we are supposed to behave. So next time when you appear for your interview, show your best side, and I wish you all the best. We'll meet very soon. Thank you.